Hello, my dear students of class 3. So, today we will discuss chapter number of your maths book. All of you, welcome to the digital classroom of Deepti Bridgewell School of Maths. Okay. So, in the earlier videos, I have already discussed two topics of this chapter. Now, the third important topic we will discuss of this chapter, that is more about solid shapes. We will discuss about solid shapes. The topics we will discuss in this video are solid shapes and some of the solid shapes that are cuboid, cube, sphere, cone and cylinder. We will discuss about these shapes. Okay. Now students, take out your maths classroom copy. As usual, you have to take out your maths classroom copy and on the top of the page, write down worksheet A1. Everyone write down worksheet A1. Then give the chapter number, that is 10, chapter number 10 of your maths book. Then give the name of the chapter, write down the name of the chapter, basic geometrical concept. Then give the heading, that is more about solid shapes, and write the topics. So students, as I will explain, you will note it down in your classwork copy. Now let's come to the first topic. So solid shapes. What are solid shapes? अब हम solid shapes के बारे में पढ़ेंगे. क्या है solid shapes? So solid shapes are three-dimensional shapes which have length, breadth and height as the dimensions. So what are solid shapes? Solid shapes are three-dimensional shapes which have length, breadth and height. लंबाई, length कहते हैं हम लंबाई, breadth को हम कहते हैं चौड़ाई और height को कहते हैं हम ऊंचाई. तो ये तीन डायमेंशंस जिस शेप में होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सॉलिड शेप्स कहते हैं. जैसे हम लोग प्लेन फिगर्स, प्लेन शेप्स के बारे में पढ़े थे, उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई था, उसमें कोई ऊंचाई नहीं था. लेकिन सॉलिड शेप्स में ऊंचाई भी होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल शेप्स कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, see here, solid shapes have faces, edges and vertices. Okay, solid shapes में क्या क्या होता है? Faces होता है, face होता है, edge होता है, edges होता है and vertices, which is the plural form of vertex. तो vertices भी होती हैं. Now let's come to the next topic. Okay, so now some of the solid shapes, we will study about some of the solid shapes which I have already written in the first page. See, these shapes we will discuss: cuboid, cube, sphere, cone and cylinder. So this is the first shape, that is cuboid. We will study about cuboid. Now see here, there is a figure in front of you. So now students, tell me, what is the figure? Since it is cuboid written here, so it must be cuboid. So now we will study about cuboid. Cuboid किससे बनता है? रेक्टेंगल के हेल्प से हम लोग क्यूबॉइड बनाते हैं. रेक्टेंगल शेप में ही जिसमें हाइट होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबॉइड. जैसे क्यूबॉइड का एग्जांपल है, आप जिस बुक को अभी हाथ में अपने पकड़े हुए हैं, मैथ्स बुक, दैट इज अ क्यूबॉइड. अब देखिए, उसमें फेसेस भी हैं, एजेस भी हैं और
वर्टिसेस भी है, उसमें लंबाई है, चौड़ाई है और हाइट जो है, आप बोलिएगा मैम हाइट यहाँ पे किसे कहते हैं? हाइट है आपका, उसमें पेजेस जितने होते हैं उतने हाइट है. सी हियर, सी द पिक्चर हियर, दिस वन, these are called faces. These are called faces. This is also face. Okay, same way this is also face. Okay, now next is edges. So which type of faces are these? These are plain faces. These are plain faces. Okay, now these are called edges. See here carefully. These are the edges. These are the edges. तो इसे क्या कहते हैं? Edges. And these are vertices. These are vertices. This one, this one, this one. These are vertices. Okay. So now students, see here there is a fill in the blanks given. You all will write in your class work copy. So now a cuboid has dash plane faces. How many plane faces are there in a cuboid? How many plane faces there in a cuboid? There are 6 plane faces in a cuboid. So a cuboid has 6 plane faces. So students, you have to draw the figure and you also have to fill in the blanks as it is written in the screen. Now it has dash edges and dash vertices. How many edges does a cuboid has? You have to count like this. See here, these are called edges. So if you will count all the edges of a cuboid, you will find that there are 12 edges. There are 12 edges in a cuboid. And how many vertices are there? There are 8 vertices in a cuboid. Now next number C is its dash faces are identical. Its dash faces are identical. So what will be the answer? Its opposite faces are identical. Its opposite faces are identical. Okay? अब देखिए बुक का फर्स्ट पहला पेज जिसमें एक्सप्लोर मैथमेटिक्स लिखा हुआ है और जो पीछे का कवर है वो दोनों सेम है, देख रहे हैं ना? तो प्लेन फेसेस जो है वो ऑपोजिट प्लेन फेसेस इक्वल होता है, आइडेंटिकल होता है, एक जैसा होता है क्यूबॉइड में. सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट शेप. नाउ द नेक्स्ट शेप इज क्यूब. नेक्स्ट शेप इज क्यूब. सो आई होप you all have seen this cube. You all have played it. So we tell it a cube. We say this as a cube. So a cube has dash plane faces. How many plane faces are there in a cube? See here. See this one. These are called
plain faces. These are called plain faces. So how many cube has? 6 plain faces. Cube has 6 plain faces. Now it has dash edges and dash vertices. So a cube has 12 vertices. If you will count, you will find that there are 12 edges in a cube and there are 8 vertices in a cube. So it has 12 edges and 8 vertices. These two things are same in cuboid and cube both. Cuboid also have 6 plain faces and cube also have 6 plain faces. In the same way, edges and vertices are also same in cube and cuboid both. Now let's come to the question number C, that is point number C, that is all the 6 plain faces are. अब यहाँ पे देखिए सारे 6 प्लेन फेसेस जो हैं वो कैसे होते हैं? क्यूब के कैसे होते हैं? Those are equal. All the 6 plain faces are equal in a cube. So students, how you will draw a cube? यहाँ पे तो एक picture दिया हुआ है. So first you will draw a square. Then you will draw another square here. Okay. Now see here properly. Now you will join the corners. यहाँ से हम इसको join कर दिए, ऊपर से हम इसको join कर दिए. Then this one and then this one. See in front of you there is a 3-dimensional figure, that is a cube. So you will draw it like this in your copy. Now let's proceed to the next shape, that is a sphere. Sphere is a 3-dimensional shape. Circle का 3-dimensional shape क्या होता है, figure क्या होता है, that is a sphere. Okay. Now see here, it is a globe here given. So this is a 3-dimensional shape. Now here it is given football. फुटबॉल दिया हुआ है तो फुटबॉल भी एक तरीके का स्फीयर ही है. So these all occupy space. ये सब जो पिक्चर्स दिए गए हैं ये क्या है, ये स्पेस लेता है ना. अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो वो स्पेस लेता है ना, तो उसे क्या कहते हैं हम, 3-dimensional शेप. और किस शेप में है वो, स्फीयर शेप में है. Now let's come to the fill in the blanks. A sphere has only dash curved face. कितने curved face होते हैं क्यूबॉइड, सॉरी स्फीयर में? See here, सिर्फ एक ही curved face होते हैं. So a sphere has only one curved face. Now question number B is it has dash vertices and dash edges. So क्या आपको यहाँ पे कोई भी कॉर्नर्स दिख रहे हैं, कोई भी वर्टेक्स दिख रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहे हैं. तो क्या होगा यहाँ पे, it has no vertices. It has no vertices and no edges. It has no vertices and no edges. Note it down students. Now let's come to the next shape. Now what is this? This is a cone. You all have seen cone. cone किस तरीके का देखें आप लोग, कॉर्नेटो तो सभी खाते होंगे. तो that is the shape of a cone. Now बड़ी बड़ी हैट पहनते हैं ना आप लोग, तो that is also a shape of a cone. So see here, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, that is a cone. So now let's come to the fill in the blanks. A cone has dash plain face. कितने plain face होते हैं? This one is the plain face. Okay, this one is the plain face of the cone. So a cone has
one plain face. And how many curved faces are there? Only this is a curved face. There is only one curved face in a cone. Now it has dash vertex and dash edge. तो वर्टेक्स मतलब क्या होता है आपको पता है? कोना. नाउ कोना कहाँ है यहाँ पे? कोऑर्डिनेट तो सिर्फ एक ही दिख रहा है हमको यहाँ पे. सो दिस इज द वर्टेक्स ऑफ अ कोन. सो हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर? इट हैज वन वर्टेक्स एंड एज. एज किसे कहते हैं? कोन के का एज कौन सा है? दिस वन इज द एज ऑफ द कोन. सो इट हैज one vertex and one edge. Okay students, I hope you have understood this shape, that is cone. Now let's proceed to the next figure, that is cylinder. आप सभी ने cylinder देखा होगा. Okay, now let's come to the shape. A cylinder has dash plane faces. कितने plane faces होते हैं cylinder में? See here. See, this is these two circles are the plane faces. These are the plane face. So how many plane faces are there? So a cylinder has two plane faces and dash curved face. How many curved faces are there? This is the curved face, जो मुड़ा हुआ है. ये पार्ट जो है ये मुड़ा हुआ है ना, इसीलिए इसे कर्व कहते हैं. सो इट हैज वन कर्व फेस. नाउ इट हैज डैश एजेस एंड डैश वर्टिसेस. सो हाउ मेनी एजेस आर देयर? हाउ मेनी एजेस? 1 2. So how many edges are there? There it has 2 edges. एंड यहाँ पे कोई आपको कोऑर्डिनेट दिख रहा है? कोना दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है. तो there are no vertices. So it has 2 edges and no vertices. कोई भी vertex नहीं होता है सिलेंडर में. ओके, नाउ आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारी शेप्स अच्छे से समझ में आ गया है. Now you have to note it down as I have explained. You have to note it down and also draw the shapes in your copies with the help of scale and hand. Now your homework is you have to do exercise 7 of chapter number 10, page number 112 in your book. आपको बुक में एक्सरसाइज नंबर 7 इस चैप्टर का करना है. अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, इसके बाद आप बहुत इजीली इस एक्सरसाइज को आप अपने बुक में कर सकते हैं. एंड योर सेकेंड थिंग इज यू हैव टू राइट द टुडेज क्लास वर्क. जो भी मैंने आपको तभी से मैंने बोला है कि जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे वैसे आप अपनी कॉपीज में लिख लेते हैं. तो यू हैव टू राइट टुडेज क्लास वर्क. मैथ्स क्लास वर्क कॉपी होना चाहिए मैथ्स का. एंड ऑल्सो अब फटाफट उसे याद कर लेना है. यू हैव टू ऑल्सो लर्न इट आफ्टर राइटिंग. ओके स्टूडेंट्स, for your convenience I am again showing you. This is the first page. Then you have to write this. Then this one. Then cube. Then sphere. Then cone. And then cylinder. And at last this is your homework. Thank you students. In the next video I will discuss the next chapter
syllabus.